बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल भी हमने पढ़ा था, ऑफ दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स ड्रग्स, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन केम्स एंड सपोर्ट्स, या द सपोर्ट्स मेडिसिन दैट आर क्लासिफाइड एज ड्रग्स एंड दैट आर प्रोहिबिटेड, जिनको मना किया गया है बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एथलेटिक सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने पढ़ा था द स्टिमुलेंट्स एंड नार्कोटिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स एंड डाययूरेटिक्स। अगर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर नोन एज सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Synthetic modification of testosterone means it increases the anabolic action. It develops the anabolic action in our body related to androgenic effects. Androgenic effects को combine करके it increase anabolic action, जो हमारी बॉडी में actions होते हैं, it increases. After that, अगर हम बात करेंगे, athletes combine anabolic steroids with के जो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं एंड मसल मास एक्सरसाइजेस जो होते हैं, उसके साथ क्या कंबाइन करते हैं। देयर इज एन जनरल एग्रीमेंट। अगर हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंक्रीज मास वेट, it increases the mass weight, it increases the muscle size, it gives the combination, it gives them to the good combination for the different weight training program. Or the different kind of athletes uses anabolic steroids to increase their weight, to put their weight, to make their maximum efforts and to make their increase in their testosterone hormones. जैसे कि weight lifters, shot putters, diuretics, discus throwers, bodybuilders, most runners, particularly sprinters जो होते हैं, that use the anabolic steroids. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं अगर हम बात करेंगे, जैसे कि ऑक्सीमाइथिलोन, टेस्टारोन, स्टेंजोलोल, मेथाडिकोन. These are the drugs that has been classified as anabolic steroids. Anabolic steroids, athletes take it, they become its habitual. They increase their muscle strength, to increase their muscle mass, to get much more weight for any sports activity, to develop their endurance, to develop their proteins in our body, to develop their potassium, to develop their body nutrients value. But continuous use of steroids can lead cardiovascular problems. It increases the chance of liver tumor. It may cause hepatitis among athletes. It causes depression, anxiety, hypertension. किडनी डिसफंक्शनल हो सकती है इफ हम टेक प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। अगर कंटिन्यूअस टेक क्या सकते हैं, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वी टेक मच मोर कंज्यूम मच मोर फॉर टेस्टोस्टेरोन, इट इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल। मतलब इट ऑल्सो इफेक्ट्स मतलब वुमेन्स पे पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उनका वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मतलब ब्रेस्ट एटॉर्फी मीन्स द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट्स, मतलब इट मे बी इनफर्टिलिटी इन वुमेन, देयर आर सो मेनी। अगर हम दूसरा बात करेंगे, दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग्स व्हिच वर यूज्ड इन ए फ्लाइट एंड फाइट मोड responses at work. These beta blockers are used to require a fine motor control in our body. When we needed a sharp, when we needed a focused point, then the athletes use these beta blockers. जैसे कि skating में, it needs much more accuracy. जैसे कि स्क्रीज जंप में, शूटिंग में, बीटा ब्लॉकर्स, how we gets much more temperament, how we gets much more coolness in our body. The use of beta blockers decreases actually our maximum cardiac output. हमारी रेट when we feel something, जब हम कोई काम करना चाहते हैं, we feel much more nervous, और हमारी हार्ट बीट जो होते हैं that increase. By increasing the heartbeat,
it can make such kind of depression. It increases the depression, and we may feel some nervous, and it may cause some disturbance. So that for these motor supports activities, the athletes use beta blockers. Beta blockers decreases our maximum cardiac output, and it increases the working capacity. We can make much more concentration when there is much more heartbeat. When there is a less heartbeat, they may focus much more. They may make much more focus. They may make much more work, and they can concentrate it much more on their work. The beta blockers included and classified drugs are propendol, but there may be so many gastrointestinal disorders may be called if we become habitual, if we take it. But it may cause dizziness, headache, muscle fatigues, tiredness body में रह जाती है, forgetfulness हो जाती है. It may cause so many heart related diseases.